ड्यूरेबल भी है। सो दिस इज़ वर्थ एवरी पेनी और आपको अच्छी प्राइस में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो है ब्रशेस मिल रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये होगा छोटा सा डे इन माय लाइफ व्लॉग। तो मुझे आज जाना है रेस्टोरेंट रिव्यू के लिए, तो मैं उससे पहले लंच बना कर रख कर जा रही हूँ। सो मेरी कुकिंग हो गई है। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, शील कम टू पिक मी अप, विल बी गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुगेदर। तो आज है सैटरडे और घर पर बच्चे हैं तो मुझे लंच बना कर जाना पड़ता है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ। और उससे पहले मैंने एक मेकअप ब्रशेस ऑर्डर किए थे जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द वीडियो बात करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। So these are the makeup brushes that I have ordered and I'll be using. So मैं तैयार हूँ and I'm waiting for my friend. आज मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है thanks to those Gubb brushes. Stay tuned for the review and ये है मेरा outfit of the day. ये है मेरा outfit of the day. So ये मेरा generally go to look है जिसमें मैं फॉर्मल प्लाजोज़ और लॉन्ग शर्ट के साथ मैं यूजुअली पहन के जाती हूँ। और ये है जैकेट एंड परफेक्ट लुक है कोई भी फॉर्मल गैदरिंग के लिए या फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए। मुझे ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस तरह की प्लाजोज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, हर कलर्स में हैं। आई लव इट। सो मुझे फॉर्मल प्लाजोज़ पसंद है जो बीच में क्रीज हो, परफेक्टली आयरन्ड पैंट। I'm here to review a cafeteria which is in Koramangala. This is called Hungry Eatery, right? Yeah, I'm here with my friend Salma. So we just had mushroom pepper and it was amazing. So I'm back from the cafeteria. उसका जो vibe था काफ़ी aesthetic और बहुत ही अच्छा था. So now let me talk about the makeup brushes. तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने नए मेकअप ब्रश यूज़ किए हैं। तो ये गब मेकअप ब्रशेस सेट ऑफ 8 है जिसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, क्राफ्टेड फ्रॉम 100% क्रूअल्टी फ्री सिंथेटिक फिलामेंट्स। और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पे हर ब्रश के बारे में आपको डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सा ब्रश किसके लिए है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर देन वेल एंड गुड, दिस हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ ब्रशेस दैट यू नीड टू यूज़ फॉर योर पाउडर, फाउंडेशन, आई शैडो एंड ब्लश। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज सो ये सेट ऑफ 8 ब्रशेस हैं। सो इसकी जो ब्रिसल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट है,
जो लग्जूरियस फीलिंग देती हैं। और इसकी जो ब्रिजल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। बहुत बार ये होता है, मैंने लोकल ब्रशेस यूज़ किए हैं और उसकी जो ब्रिसल्स हैं बहुत जल्दी निकल जाती हैं, बट इसकी जो है टाइट पैक्ड है। इसकी जो grip है वो anti slip है, and this is designed for beginners as well as professionals. So if you're a beginner just like me, so this is the best investment, and even if you're professional you can go for it without any second thought. और these are easily washable. ये जो सारे के सारे जो brushes हैं जो easily washable हैं। एंड ऑल्सो अब जब मेकअप करते हो तो बहुत बार ये हो जाता है कि बहुत सारा मेकअप या आई शेडो ब्रश पे ही रह जाता है। सो दिस प्रॉमिसेस लीस्ट वेस्टेज ऑफ योर मेकअप, एंड द बेस्ट थिंग, बिकॉज वी इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मेकअप, सो the best thing about this is least wastage, and these are 100% cruelty free. Now I have been switching to cruelty free makeup, so when I got to know that Gubb is 100% cruelty free, I was so excited to use it, and these are hypoallergenic and highly recommend it. So they have discount going on, so you can check my description box for the discount code, and my screen पे भी आपको flash कर दूंगी. You can use that and let me know if you have used these brushes and what do you think about it. अब इसके बाद मुझे कुछ रील्स शूट करनी है अपने इंस्टाग्राम के लिए. आई होप यू एन्जॉयड दिस मिनी व्लॉग and don't forget to subscribe to my channel.